बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैं हूं साजिद आलम और आप देख रहे हैं फिज़िक्स मैथमेटिक्स हब। आज हम क्लास 10 के यूनिट 12 का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज का हमारा सवाल टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन और लंबाई के मुतालिक है। A telescope has a magnification of 40 and a length of 1230 millimeters. What are the focal lengths of the objective and eyepiece? एक टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 40 है और उसकी लंबाई 1230 मिलीमीटर है। इस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के फोकल लेंस क्या होंगे? डियर स्टूडेंट्स, एक आम टेलीस्कोप जो मेन लेंसेज पर मुश्तमिल होता है, एक बड़ा लेंस जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं जो दूर की रोशनी को कलेक्ट करता है, और एक छोटा लेंस जिसे आई पीस कहते हैं जिसके ज़रिए हम उस जमा की हुई रोशनी को मैग्नीफाई करके देखते हैं। लेट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 8। टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन इस बात पर इन्हिसार करती है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ से कितना बड़ा है। From the statement, we are given magnification of telescope denoted by m and equal to 40. Length of telescope denoted by capital L and is equal to 1230 millimeters. In the statement, we are asked to calculate two quantities. In part A, we have to calculate focal length of eyepiece denoted by FE, and in part B, focal length of objective denoted by FO. अब जब हमें मालूम हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। Magnification is equal to focal length of objective divided by focal length of eyepiece. We can also write this as m is equal to FO divided by FE. Solving for FO, we get FO is equal to m multiplied by FE. Let this is equation 1. Now, as we know that length of telescope is L equals to FO plus FE. Using equation 1 here, we get L is equal to m multiplied by FE plus FE. Taking FE common, we get L is equal to m plus 1 multiplied by FE. Solving for FE, we get FE is equal to L, which is length of telescope, divided by m plus 1. Substituting the values, we have FE is equal to 1230 millimeters divided by 40 plus 1. After simplification, we get FE is equal to 30 millimeters. Thus, the required focal length of the eyepiece of the telescope is 30 millimeters. Now, going to solve part B, where we have to find the focal length of the objective
we use equation 1. Equation 1 implies that FO is equal to M multiplied by FE. Putting values, we get FO is equal to 40 multiplied by 30 millimeters. Taking the product, we get FO is equal to 1200 millimeters. Thus, the required focal length of the objective of the telescope is 1200 millimeters. Dear students, the solution leads us to the conclusion that the focal length of the eyepiece is 30 millimeters. The eyepiece is smaller because it magnifies the image formed by the objective. eyepiece छोटा होता है क्योंकि ये वो तस्वीर बड़ा करके दिखाता है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया होता है. A shorter focal length eyepiece gives higher magnification. शॉर्टर फोकल लेंथ वाले आईपीस का मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है. The focal length of the objective lens is 1200 millimeters. The objective lens is bigger because it needs to collect light from far away objects like stars and planets. ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है क्योंकि इसे दूर दराज अजसाम जैसे सितारों और सैयारों से रोशनी जमा करनी होती है. The more light it collects, the clearer the image becomes. ऑब्जेक्टिव लेंस जितनी ज़्यादा रोशनी जमा करता है, तस्वीर उतनी ही ज़्यादा वाज़ेह होगी. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. उम्मीद है आपको समझ आई होगी और फ़ायदा हुआ होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल फिज़िक्स मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.